Hello future doctors, welcome to Dipainism. I am Dr. Dipen Shah and today we are going to discuss कि इंसान के दिल के अंदर exactly क्या क्या होता है. हाँ, दिल की बात समझेंगे लेकिन दिमाग से ही समझेंगे. So we are discussing the internal structure of the human heart. Now human heart internally shows variety of structures जिसको हम लोग को step by step पढ़ना है क्योंकि every component has a specific value. Now as such हम लोग को पता है कि human heart consists of 4 chambers. The superior chambers are going to be known as the atria and the inferior chambers are known as the ventricles. Atria को हम लोग बोलते हैं receiving chambers क्योंकि blood उसके अंदर आने वाला है, plus they are comparatively thin walled and they are superior. Whereas ventricles जो है they are inferior chambers, they are comparatively thick walled and they are going to be the distributing chambers क्योंकि blood को ये pump करेंगे out of the heart. Now on our left side is the patient's right side, whereas हमारे right side में this is the patient's left side. So this becomes the right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. First point that you have to remember is कि हमेशा right side से there is flow of deoxygenated blood, whereas from the left side there is flow of oxygenated blood. On the right atrium, the deoxygenated blood is received through superior vena cava, inferior vena cava, and another opening that is present is of the coronary sinus. जो coronary veins heart से deoxygenated blood लेके आएंगे that is collected in the coronary sinus. So ये जो opening दिखा है ये superior vena cava का opening है. This opening is of the inferior vena cava and this opening is representing the coronary sinus. So these are the 3 openings present in the right atrium. Now inferior vena cava and coronary sinus को देखो तो मैंने black color के structures दिखाए. These structures are representing the valves. Superior vena cava में backflow of blood नहीं हो क्योंकि ऊपर से blood जब भी आएगा so directly the blood will enter into the right atrium. But inferior vena cava से backflow ना हो, that is why it is guarded by a valve which is known as the eustachian valve. So यहाँ पे eustachian valve का presence है. Similarly, जो कोरोनरी साइनस का ओपनिंग है दैट इज ऑल्सो गार्डेड बाय वाल्व एंड दैट वाल्व इज नोन एज द थेबेशियन वाल्व. सो इज द यूस्टेशियन वाल्व एंड हियर इट इज द थेबेशियन वाल्व. नाउ कमिंग टू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम इज गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम two pulmonary veins which are coming from the left side and 2 pulmonary veins which are coming from the right side. So these are bringing the oxygenated blood from the lungs. So these are the 4 openings of the pulmonary veins present in the left atrium. This left atrium basically is comparatively smaller as compared to the right atrium. The reason for that is right atrium receives the deoxygenated blood from all the body parts. So it is larger in size as compared to that left atrium सिर्फ लंग से ही ब्लड कलेक्ट कर रहा है so it is smaller in size. So जिसने भी ये डिजाइन बनाया है उस ऊपर वाले ने सोच समझ के सब साइजेस वगैरह को रिप्रेजेंट किया है. Now right atrium and right ventricles के बीच में there is presence of 3 flap like valves. इन valves को हम लोग बोलते हैं as the tricuspid valves. So tri meaning 3 and cusp means flap. So this is the tricuspid valves between the right atrium and the right ventricle जो backflow prevent करेगा. Similarly on the left side between the left atrium and left ventricle there is presence of 2 cup like flap like structures which are known as the bicuspid valves or the mitral valves. अगर ऑब्जर्व करें तो ये valves को होल्ड कर रहे हैं कुछ cord like structures. These cord like structures are known as chordae tendineae. So chordae tendineae, these are the बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होल्ड कर रहा है वाल्व्स को. एंड ये chordae tendineae किससे कनेक्टेड है तो वेंट्रिकल्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मसल्स. उन मसल्स से कनेक्टेड है. तो ये जो शेडेड पोर्शन है these are the muscles and these muscles are known as the papillary muscles. So papillary muscles से ये chordae tendineae अटैच्ड है एंड ये वाल्व्स को एट्रियम की तरफ ओपन होने ही नहीं देगा. इट विल कीप देम स्ट्रेच सो दैट बैकफ्लो ऑफ ब्लड होगा ही नहीं. एक बार ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ गया रिटर्न बैकफ्लो नहीं होगा. सो दिस वी हैव रिप्रेजेंटेड अबाउट द वाल्व्स एंड द chordae tendineae. नाउ this is the right ventricle
and right ventricle से there is a particular blood vessel that arising, and that blood vessels is the pulmonary artery. So this is the pulmonary trunk and these are the two pulmonary arteries which will be going towards the respective lungs, जो deoxygenated blood को carry करेगा towards the lung. Similarly, left ventricle से the blood vessel that arises, that is the aorta. एओर्टा को हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, एंड ये सब तीन जो उसके ब्रांचेस है इन आर्टरीज के बारे में भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइजिंग इज द एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकल से अराइजिंग इज द पल्मोनरी आर्टरी. Now, at the base of the pulmonary artery and at the base of the aorta, there is presence of 3 semilunar valves each. So 3 semilunar valves, these are going to be known as the pulmonary semilunar valves and these are known as the aortic semilunar valves, जो again backflow of blood prevent करेगा once the ventricles pump the blood into the respective arteries. So this we have discussed about the atria, the tricuspid bicuspid valves and the respective ventricles, and ये structures थे chordae tendineae, this is the papillary muscles. Now last important point कि ventricles का जो inner wall है it is thrown into series of ridges. ये ridges आप लोग appreciate कर पा रहे रहेंगे. So this ridges are known as columnae carneae या फिर it is known as trabeculae carneae. So these are the irregular ridges. Final most important point that on the right atrium, can you see this depression? This depression represents a structure known as fossa ovalis. So fossa ovalis is a depression present on the right side of the interatrial septum. और ये एक opening रहता है during the embryonic stage. उस opening को बोला जाता है as foramen ovale. ये foramen ovale रहेगा in the fetal life, जो right atrium और left atrium को connect कर देता है. But as the child is born, ये क्लोज होके यहाँ का इस पे एक रेमिनेंट रह जाता है, उस रेमिनेंट को हम लोग बोलते हैं फोसा ओवालिस. सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसा ही हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जहां पे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा वाज कनेक्टेड बाय लिगामेंटम आर्टेरियोसम, जिसका एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंस होता है डक्टस आर्टेरियोसस. सो ऐसा एक सिमिलर बाईपास है जो प्रेजेंट रहेगा इन दी हार्ट. सो दिस in detail we have discussed about the internal structure of heart. So stay tuned for my further videos. That's all from Dipainism.